Okay, Assalamu alaikum. So I was telling that in our management subject we have four actually the functions. What are those functions? The planning, organizing, then afaq. Are you there all? You can unmute your mic whenever you want to talk. Yeah, when I am asking. Okay, so you can unmute and then talk. जी सर So I was saying there are four functions. Number जी one जी is the सर planning, then जी organizing, then किसी को याद है? Arisha? Yes, Murtaza. सर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग And leading. लीडिंग Leading and controlling. अच्छा, ये उम्मे ऐमन हमारी क्लास की है? नो सर उम्मे ऐमन कौन है? सर पता नहीं कौन है। हेलो, उम्मे ऐमन नाम का जो स्टूडेंट था कौन है? सर उम्मे इंशिरा ఉంది उम्मे ऐमन है। सर पर हमारी क्लास से नहीं है। उम्मे ऐमन के नाम से जो आईडी है, तो काइंडली टेल मी, either I will block you. Okay, I have removed her. Okay. So there are four functions. Rightly, you have asked the planning, organizing, leading, and controlling. Okay. So these four functions actually not only show that how the management works, but it also includes what are the. It also categorizes the all managerial functions into four categories. Huh? So first is the planning. Planning, it means once you have to think about it. No? You have to think before doing. So planning is something which you make a strategy, which you make the plans, which you think before doing anything. And in the function of the planning, actually managers, you know, try to establish what they want to do and what they have to do, and they have to establish how they can achieve their goals. So planning phase will let you know how you develop your mission, develop your vision, develop your goals, develop your objectives, and you plan the activities to achieve your objectives. Okay, so this is the major. This is the first step of the management function, in which you firstly decide what you have to do and how you have to do. Okay, so we will discuss the what are the foundations of the planning and what are the key concepts of planning function. And you all already know that our book or in our course is also designed in this categorization, and we will be discussing the chapters and the concepts following this category are the major four functions: planning, organizing, leading, and controlling. So what is planning? Can you tell me what is the planning? Planning is a primary managerial activity that involves three things. Firstly, you have to define the organizational goals. It means what are the goals? Goals means objectives which you have to do. You must do what you want to achieve. Huh? So goal is the thing, the end result which you want to achieve. And second point is establishing an overall strategy for achieving those goals. Firstly,
what you want to do, what sort of the activity you want to undertake, what sort of the mission you want to achieve, what are your major objectives, what do you want to gain, and then the strategy, the plan, the fingerprint, the the strategy, the working method through which you can achieve those goals. Huh? Thirdly, development plan for the organizational work activities. तीन चीजें हो गई ना. पहले तो आपने प्लानिंग में आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर मैंने ये काम करना है, फिर आप बताते हैं कि कैसे काम करना है, फिर उस काम करने के जो तरीकेकार है उसकी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज उसको आप प्लान करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप कोई टूर प्लान करते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि हमने टूर पे जाना है, ठीक है. उसके बाद फिर आप फर्दर एक्टिविटीज जो है उस टूर के लिए पहले से प्लानिंग करेंगे और उसके लिए आप जो है वो डेट फिक्स करेंगे, वेन्यू फिक्स करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फिक्स करेंगे और फिर आप जो है वो चेक करेंगे जी आपने कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, कौन कौन जाएंगे, कितना खर्चा होगा, क्या चीज़ होगी, और ये सारी चीज़ें आप जो है वो करेंगे. फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बांटेंगे और आप फिर बाद में जो है उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे. ये प्लानिंग का जो फेस है इसमें जस्ट आपने क्या करना होता है, आपने गोल सेट करने होते हैं, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, आपने अपने काम का प्लान करना होता है और शुरू में जो है आपने इनके बारे में सबसे पहले आपने सोचना होता है. तो ये प्लानिंग है. और प्लानिंग दो किस्म की होती है ऑर्गेनाइजेशन में. Firstly, the informal planning and the formal planning. Informal planning, the plans which are not written, which are not the part of the policies or standard procedures. They are short-term focus and they are not written down, but people make it as a routine. Huh? People do it on routine basis, or they are actually specific to particular organizational unit. So what people do, how they do, how they activate their plan. So there is no any need for a written plan, because you at the start of the day, at the start of a week, you normally lay out the activities and you start it. So there is no any formal approval of making those plans, but it is a part of our routine. Formal plan are something which is written, which has been deliberately carried out, and after the deliberations after the consultations of different stakeholders, then you make a long-term plan and you involve all other people who are related to a particular task or a particular job. Okay, considering all the peoples and their interests and their input, you make a formal plan, approve it, and make it necessary for others to follow. So that is something formal plan. Formal वो होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड हो, ऑर्गेनाइजेशनली डेवलप्ड हो, लोगों की और कहीं ना कहीं वो रिटन शेप में हो, साइन शेप में हो, जिसको आप उसे रूगर्दानी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अनफॉलो इट. You have to follow it because it is part of your policy. It is part of your SOP, standard operating procedure. So these are the formal plans. Actually, from the legal point of view, from the policy point of view, there are two types of plans: informal and the formal. Okay. So the major question is why we should go for the planning. Why the managers plan the activities? So answer is, firstly, planning provides us a direction. Planning guides our behavior. Planning supports what we have to do. Planning tells us what we need to do and what we need not to do. Planning tells us when we have to undertake a task. Planning tells us what is the path of, what is the direction, what is the way work should be carried out. Okay, so it is all which is the planning. Okay, so
Second function of the planning is it removes uncertainty. It clarifies the path. It removes ambiguities. It clears the vision. It tells us clearly what we have to do. In the shape of uncertainty, you don't know what is going to happen. Planning tells us what we have to do. So it removes the barriers. It removes the uncertainties. Okay. Third function is it minimizes the waste and redundancy. What is the waste and what is redundancy? Redundancy is the duplication of the activities. So redundancy is the duplication of the activities, right? Duplication means when your things are done by different people or different activities, and you don't know what about you have to do. Okay, so this is the redundancy when your plans are mixed up and your activities are mixed up, and you don't know who has to do what activities. Okay, and sometimes we waste the time, sometimes we waste the resources. So planning removes these things and minimize the waste and the redundancy in a way that it tells us at what time we have to do and what person will do the activities. तुझे पता होगा कि ये काम इसने करना है, ये काम इस वक्त में करना है, तो हमारी जो है चीजें जो है वो क्या हो जाती है, एक तरतीब डेवलप हो जाती है, और जब तरतीब ना हो तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं. आपको नहीं पता प्लानिंग में आपने क्या करना होता है. प्लानिंग में आप ये करते हैं कि हमने एक्टिविटीज को जो है उनको लिए टाइम फ्रेम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, और उनकी कौन सी एक्टिविटीज करनी है वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं. जब आपने टाइम टेबल बनाया, वो आपको पता है कि मैंने सुबह उठना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम से लेकर इस टाइम ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है. सारे कामों की आपके पास लिस्ट आ जाती है, और फिर उस लिस्ट के मुताबिक आप उसके लिए टाइम स्लॉट दे देते हैं. ठीक है, तो जब आप टाइम स्लॉट दे देते हैं तो फिर आपका टाइम जो है वो ट्रूली यूज हो जाता है. कोई काम आपका रह नहीं जाता, कोई काम आपका जो है वो डुप्लीकेट नहीं होता. हो सकता है, और अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो फिर आप अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, जिस टाइम मर्जी करो, जिस टाइम नहीं मर्जी करो, तो फिर क्या होता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं, चीजें जो है वो रह जाती हैं. आपने प्लान नहीं किया, आपके बहुत से काम जो है वो रह जाते हैं. तो देखें, लाइफ में ऐसा होता है कि अनप्लान्ड लाइफ इज इट इज जस्ट लाइक द अनडायरेक्टेड पर्सन. उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको कोई पता नहीं है कि क्या करना है. देयर आर मेनी थिंग्स समटाइम हावर ओवर आवर शोल्डर्स. ओके, कि वो क्यों कि वो चीजें हो जाती हैं, आप समझेंगे पाइल अप हो जाती हैं, एक्टिविटीज आपकी पाइल अप हो जाती हैं और स्टोर हो जाती है, इकट्ठे हो जाती हैं, ढेर बन जाती हैं, और फिर जो है अचानक जब आपके सर पे लगती है तो फिर बहुत सा काम आप नहीं कर पाते. ठीक है, तो फिर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि द टाइम व्हिच हैज बीन पास्ड you cannot retrieve that time. Okay, so you need not to waste that time, so you want to utilize the time very carefully and very tactfully. So in this way you need to plan the activities, you need to pre-think the activities, है ना. So planning help us minimizing the waste and redundancy. Okay, fourth point is that the planning tells us the standards for the controlling. So what we need to control in controlling function, actually, we have to see whether the activities are being undertaken as we plan or not. So, the planning facilitates the controlling function in a way that planning tells us at what time you have to do, and if that thing is not being done as with the time, so you can find out the discrepancy. Okay, so if in the absence of the plan you cannot determine what you have to do, yeah, what you are supposed to do at what time. Okay,
तो कंट्रोलिंग में सपोर्ट करती है कि ये एक यार्डस्टिक प्रोवाइड करती है प्लानिंग जो है आपके लिए, क्योंकि आपके प्लान में होगा, आप उठेंगे आपको पता होगा कि ये चीजें होंगी, आपके पास टाइम टेबल दिया हुआ है, आपको पता है इस स्लॉट के अंदर इस टाइम के अंदर जो है वो फिल्म क्लास होनी है, तो यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, तो ये दैट्स व्हाट, अगर नहीं होती चीजें तो हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम जो है वो प्लान्स बनाते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी लिंक between the planning and the performance, because in organization we are mostly concerned about increasing the performance of the employees, increasing the performance of the organizational departments, and increasing the performance of the organizations. Okay, so what sort of activities, the manager activities, the leadership activities, the employee behavioral management we do, basically we do it just because we have to increase performance. Okay, so what are the performance parameters? Performance can be measured through the productivity. It means the time in which you undertake the activities, and the rate at which you undertake the activities which provide you the production of the goods and services in a time period with lesser cost. Okay, so productivity can be measured through the efficiency and the effectiveness. Okay, then there are the standards of the measuring the performance, just like the financial performance or the employee performance, the organizational performance, or the non-financial performance. The financial performance is measured through the revenue which you generate, the income which you generate. Okay, and the quality of the products you produce, quantity of the products you produce in a particular given time period, the targets you achieve in a limited time period. So all these things let us know what is our performance. Okay, so the planning function has a positive relationship with the performance. Okay, because more you plan, the quality of plan will let you estimate or determine your quality of performance. Okay, because when the plans are well articulated, well developed, so it may be, and yes, the implementation is also important. So only simply the making of the plans is not enough, is not sufficient. You need to implement those plans in true light and spirit. When the plans are made very tactfully and those plans are implemented as per in the true light and the spirit, then they will increase your performance. Okay, so there is a positive relationship between planning and performance. So secondly, the formal planning is associated with the higher profit and return on the assets and the positive financial results. Okay, so it is it is proved through the empirical studies, the research, that when you make the plans and make formal plans and official plans, those official and formal plans which are formulated, which are prepared with after the consultation with the different stakeholders, so they create not only the standard for the controlling, but when the plans are made by through the participation of the people, so then the people own those plans. People agree that we have to undertake these activities. So, and then when those plans are executed as per decisions, then it results in higher profits. As I studied, I told you that you generate more revenue and you generate more profit out of those revenue. Then the return on assets is also a financial yardstick or the ratio which measures how much you generate profits in relation to your assets. Okay, and then the positive financial results. Positive financial results means when your revenue surpasses your cost, so then it means you have something extra in excess, which is called as a profit, right? The quality of planning and implementation
has an effect over the performance more than the extent of planning. As I discussed earlier, only the planning is not sufficient. You make the plans more, very great plans. But if you don't implement them, if you don't truly implement them, if you don't create a sense of inclusiveness in the employees, you don't create the sense of ownership in the management and the employees, then those plans are not implemented properly. So yes, surely these plans, merely making the plans as a piece of the paper, will not yield any performance, will not yield any benefit. Okay, so the plans are good thing, but good thing is to implement them. Once you implement, the way you implement them, they definitely have a positive effect on your performance. यहाँ से बात सिर्फ ये हुई कि प्लानिंग जो है, सिर्फ प्लानिंग कर देना ये कोई वो नहीं है, आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं करेगा। प्लानिंग तब इंक्रीज करेगी आपकी परफॉर्मेंस को व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड। ओके, बात समझ आ रही है? व्हेन, जब उसके ऊपर आप अमल दरामद करते हैं तभी वो जाके वो करेगी। उसके अलावा एक और चीज के ऊपर आती है, और वो ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, है ना? कैसे? समटाइम वी प्लान, वो कहते हैं ना कि मैन proposes, God disposes. Sometimes we plan many things, but we cannot implement because of the external conditions which are beyond our control, which are not in our control. So if such conditions happen, our plans go unimplemented, and definitely they will not, we will not be able to yield certain performance which as we expect. Okay, तो ये है कि कभी कभी जो है बाहर की चीजें, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, वो भी हमारी प्लानिंग की क्वालिटी के ऊपर या प्लानिंग और परफॉर्मेंस के लिंक के ऊपर असरअंदाज होती हैं। और वो कौन सी हैं? कभी कभी जो है चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज कभी कभी कोई चीजें ऐसी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से हमारे वो प्लान जो है वो नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक सेल्समैन जो है प्लान करता है कि जी मैं जो है इस बार नई जो है नए कस्टमर्स बनाऊंगा और नए क्लाइंट्स बनाऊंगा, नई जो है मार्केट्स को अप्रोच करूंगा और आखिर में सेल अपनी इंक्रीज करूंगा। हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि वो वहाँ उन मार्केट्स तक विजिट न कर सके, क्लाइंट्स तक विजिट न कर सके। ठीक है, मिसाल के तौर पर बारिशें आ जाती हैं, सैलाब आ जाता है, या इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती है, या जिस तरह कोरोना लाइक कंडीशन डेवलप हो जाती है जहाँ पे बंदों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो आप प्लानिंग भी आपने की हुई थी, आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रेडी थे, और समटाइम आपने इम्प्लीमेंट किया भी, मगर फिर भी उसके रिजल्ट्स नहीं आए जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन। Farmer planning must be used for the several years before planning begins to affect the performance. That is major thing. People normally think that we have to, the garner the support and the performance once we implement it. We plan and we execute and we need results. Planning is a function which will let you benefit after a longer period, after a delayed time. यहाँ कोई फौरी जो है वो फायदा होने वाला समटाइम नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जो है वो इम्पैक्ट आते हैं प्लानिंग के। ठीक है, और वैसे भी जो है आप जब प्लान करते हैं और लॉन्गर प्लानिंग करते हैं और मुसलसल करते हैं और उसमें उसको अपडेट करते रहते हैं और उनको आप तब्दील करते रहते हैं, उसमें न्यू एडिशंस करते रहते हैं, तो तभी जाके आपको जाके बेनिफिट होता है और कोई ना कोई फायदा होता है। ठीक है।